Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so this is the second video from the exercise 3.2 ML Agarwal, and in this video I am going to start from sum number 11. For the previous video, please check the description box. So here in sum number 11 you have to prove that tan by 1 minus cot x plus cot x by 1 minus tan x that equal to 1 plus tan x plus cot x equal to 1 plus sec x cos x. Okay, that means we have to separate this sum into two parts. Okay, first one will be equal to second one and then second one will be equal to third one. So here the first one, now tan x and then cot x will be 1 by tan x, so 1 minus 1 by tan x. Here also cot x by 1 minus tan x. Now here the LCM is tan x, that LCM tan x multiply with the upper one, it will be tan square x, and in denominator it will be tan x minus 1. Here minus, why minus? As here 1 minus tan x, if you common minus from that one, so it will be tan x minus 1, and that minus will be multiplied with plus, it will be in minus, so cot x. Now here tan x minus 1, tan x minus 1, so LCM is tan x minus 1, and then the numerator will be tan square x minus cot square x. So here 1 by tan x minus 1, now tan square x will be remain same and cot x will be changed into 1 by tan x. So 1 by tan x minus 1, now here tan x is the LCM, so tan into tan square, tan cube x minus 1. So here you can apply the formula a cube minus b cube, and the formula is a minus b, a square plus ab plus b square. So now tan x minus 1 will be cancelled out, so here tan square x plus tan x plus 1 by tan x. Now tan square x by tan x that equal to tan x by tan x that equal to 1, and 1 by tan x that equal to cot x. So it's proved. Okay, now you have to prove this one equal to this one. So here 1 plus tan x plus cot x, then 1 plus tan x means sin x by cos x plus cot x means cos x by sin x. So here the LCM is sin x into cos x, and the upper one will be sin square plus cos square x. So now 1 plus, as here sin square plus cos square, that means another 1, so 1 plus 1 by sin x cos x. Now you know that 1 by sin x means cosec x and 1 by cos x means sec x. So 1 plus sec x cos x, sorry cosec x. So it's proved. Now next one, 11.2. 1 plus cos x plus sin x by 1 plus cos x minus sin x. You have to prove that this one equal to 1 plus sin x by cos x. Okay, so here as you have to first multiply cos x with numerator and denominator. Numerator denominator को both दोनों को ही multiply करना है cos x से. So cos x into the upper one and cos x into the lower one. Now cos x into 1 plus sin x here, and cos x into cos x that equal to plus cos square x. In the lower portion, cos x into 1 plus cos x minus sin x will be remain same. Now here cos x into 1 plus sin x will be same, and cos square x change into 1 minus sin square x, because sin square x plus cos square x equal to 1. Okay, according to that formula, cos square x equal to 1 minus sin square x. Now next, 1 minus sin square x, you can here apply the formula a square minus b square, and that will be a plus b, a minus b. Clear? Now next, in the upper one, here 1 plus sin x is common. So after common 1 plus sin x, it will be cos x, then plus, then 1 minus sin x. Now cos x plus 1 minus sin x, it will be cancelled out in the denominator also. Here also 1 plus cos x minus sin x. So these two are cancelled out. So the final answer 1 plus sin x by cos x. So it's proved. Sum number 12. Cos square x by 1 minus tan x plus sin cube x by sin x minus cos x that equal to 1 plus sin x cos x. So cos square x by, as tan x means sin by cos, sin cube x by sin x minus cos x. So here the LCM is cos x, that cos x will be multiplied with this one and you will get cos cube x. So in the denominator it will be cos x minus sin x. Here also, as here sin x minus cos x, so
So just change into cos x minus sin x. That means minus will be common from here. So that plus will be in minus. And it's changed into cos x minus sin x to equal these two denominator. So now here the denominator will be cos x minus sin x and the upper one will be cos cube x minus sin cube x. Cos cube x minus sin cube x. That means here you can apply the formula a cube minus b cube. Here मैंने यहाँ पर मैंने एक स्टेप जंप किया है, a cube minus b cube का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, a minus b, that means cos minus sin, then a square plus ab, so cos x into sin x, and last one b square, that means sin square x. यहाँ पर मैंने स्टेप जंप किया है. So now cos x cancel out with cos x minus sin x, so these two will be cancel out, and here cos square x plus sin square x, that equal to 1 by the formula, and then cos x sin x. So now it's proved. Next one, sum number 12(2). Cot square x into sec x minus 1 by 1 plus sin x plus sec square x into sin x minus 1 by 1 plus sec x. You have to prove that equal to 0. So here the LCM will be 1 plus sin x into 1 plus sec x. Then cot square x, sec x minus 1, and then multiply with sec x plus 1. Then plus sec square x, sin x minus 1, multiply with 1 plus sin x. Sorry, it's 1 plus sin x. Then as here sec x minus 1, sec x plus 1, so a minus b, a plus b, that means a square minus b square, so sec square x minus 1. Here sin x minus 1, sin x plus 1, so sin square x minus 1. Now sec square x minus 1, that is the formula of tan square x, and sin square x minus 1, that is the formula of minus cos square x. So cot square into tan square. Now tan square means 1 by cot square. So cot square cancel out, it will be 1. Cos square means 1 by sec square. And as here minus, so plus into minus, it will be minus. And sec square into 1 by sec square will be cancelled out, it will be another 1. So 1 minus 1, 0. अब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड किया तो 0 ही आएगा. So final answer equal to 0, and it's proved. Number 13(1). Cot x plus cosec x minus 1 by cot x minus cosec x plus 1. You have to prove that 1 plus cos x by sin x. So now here cot x minus cosec x plus 1, denominator will be same. And the upper one cot x plus cosec x. Now listen carefully. Instead of this 1, you have to write down cosec square x minus cot square x, because by the formula cosec square x minus cot square x equal to 1. So you can easily write down instead of 1 in this order. Okay, that means cosec square x minus cot square x. So now here cosec square x minus cot square x means cosec x plus cot x and cosec x minus cot x. That means a square minus b square formula, a plus b into a minus b. So here cot x plus cosec x will be common. So first write down here cot x plus cosec x, and then in third bracket write down 1 minus, here the negative term will be there, so cosec x minus cot x. यहाँ पर मैंने एक स्टेप जंप किया है. पहले इसको a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करना है, फिर उसके बाद जो a प्लस बी पोर्शन है उसको कॉमन लेना है. सो 1 माइनस a माइनस बी पोर्शन रहेगा. अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते, ब्रैकेट अगर यहाँ पर हटा देते तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. अगर ब्रैकेट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो ये वाला टर्म आएगा 1 माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिनोमिनेटर. यहाँ पर भी 1 माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, सो ये दोनों पोर्शन कट जाएगा. सो फाइनल आंसर आएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स. अब कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स को मुझे इस पर ट्रांसफर करना है. नाउ कॉट एक्स मीन्स कोसेक एक्स cos x by sin x and cosec means 1 by sin. दोनों का LCM भी sin ही होगा. So sin x and ऊपर में होगा 1 plus cos x. So it's proved. Sum number 13(2). In the left hand side sin x by cot x plus cosec x. The right hand side you have 2 plus sin x by cot x minus cosec x. So पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है. अब दोनों को सेम दिखाना है. So sin x, cot means cos by sin, cosec means 1 by sin. So now here the LCM is sin x,
दैट साइन एक्स मल्टीप्लाई विद द अपर वन, इट्स साइन स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस 1. नाउ साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सो हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a square minus b square, that means a plus b, a minus b. So 1 plus cot x into 1 minus cot x. अब 1 plus cot x डिनोमिनेटर से कट जाएगा, so remaining रहेगा 1 minus cos x. Now the right hand side. Right hand side 2 plus sin x, cot x change into cos by sin, cosec means 1 by sin. Okay, again sin x is the LCM, sin x multiply with this one sin square x and it will be cos x minus 1. Sin square x means 1 minus cos square x और नीचे से मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, सो इट विल बी चेंज इनटू 1 माइनस, सॉरी इट्स चेंज इनटू 1 माइनस कॉस एक्स. अगर नीचे से एक माइनस कॉमन लिया तो ये वाला चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स में. सो नाउ प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस, और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट विल बी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स. अब 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स. ना इसको ब्रैकेट को हटा दो, सो 2 माइनस 1 इट बिकम्स 1, देन प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स. सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर द सेम वैल्यू, सो दैट इज प्रूव्ड. नाउ सम नंबर 14(1), sin x प्लस cos x इंटू sec x प्लस cosec x दैट इक्वल टू 2 प्लस sec x cosec x. So first you have to multiply these two terms. So sec x into sin x sec x, sec x into cos x sec x, cosec x into sin x sin cosec, cosec into cos cosec. Now sec is the reciprocal of cos, that means 1 by cos, दोनों कट जाएगा. यहाँ पर भी cosec is the reciprocal of sin, so sin कट जाएगा. So now sin and sec means 1 by cos, that's why sin by cos. ये वाला 1, so 1 plus 1. Now cosec is 1 by sin, so cos by sin. So now 1 plus 1 2, and here cos and sin, so LCM is sin into cos, so the upper one sin square plus cos square and that equal to 1. So 2 plus 1 by sin x cos x. So final answer 2 plus 1 by sin means cosec, 1 by cos means sec. So 2 plus sec x cosec x. It's proved. Sum number 14(2), cosec x minus sin x, sec x minus cos x, tan x plus cotec x. Sorry, tan x plus cot x. You have to prove that equal to 1. So here cosec means 1 by sin, then minus sin x. Sec means 1 by cos minus cos x. Tan means sin by cos and cot means cos by sin. So here the LCM is sin x. Now in the numerator it will be 1 minus sin square x. अब यहाँ पर मैंने एक स्टेप जंप किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया. यहाँ पर भी कॉस एक्स एलसीएम होगा, ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया. यहाँ पर भी कॉस एक्स साइन एक्स एलसीएम होगा, ऊपर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इक्वल टू 1. यहाँ पर भी मैंने स्टेप जंप किया है. सो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर कट जाएगा दैट इक्वल टू 1. सो 1 इज द फाइनल आंसर. सो इट्स प्रूव्ड. Sum number 15. That is the last sum for this video. So if you like my video, please share this video with your friends. And I'm trying to solve all the problems from each and every exercise. So please support me. And if you are new viewer, so please subscribe my channel. So here sum number 15(1). Sin cube x plus cos cube x by sin x plus cos x. Sin cube x minus cos cube x by sin x minus cos x. You have to show that equal to 2. So sin cube plus cos cube means a cube plus b cube. The formula will be a plus b, a square minus ab plus b square. Here also a cube minus b cube. So a minus b, a square plus ab plus b square. So sin x plus cos x will be cancel out. Here sin x minus cos x cancel out. So now sin square x plus cos square x that equal to 1. So 1 minus sin x cos x. Here also sin square x plus cos square equal to 1. So 1 plus sin x cos x. अब ब्रैकेट को हटा दो. So sin x cos x will be cancel out. As here minus, here plus. So 1 plus 1 equal to 2.
नाउ नेक्स्ट वन 15-2. 15-2 इज द एज सेम एज सम नंबर 11-1. एकदम पहले जो एकदम फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके एकदम इक्वल है. सो आई होप यू कैन सॉल्व इट.